सो 33 का डी, राइट? या बीच में इंटरप्शन हो गया था, सो हाँ, या अब अपन कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस पाई पावर 3 प्लस 2x माइनस कोस, हाँ ठीक है। आपने कुछ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इजंट दैट लाइक सेइंग कि सपोज अपन ने लेट्स जस्ट से x इज इक्वल टू एफ ऑफ t पुट किया, राइट? जस्ट या फॉर सम वेरिएबल t, अगर x एफ ऑफ t ऐसे बिहेव करता है, देन दिस बेसिकली इज लाइक सेइंग एफ इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा? That will just be t, right? So it's like saying dt upon df of t, which is, yeah, so it's like just 1 upon f dash of t, right? So अब बोल रहे हैं कि we want this derivative at x is equal to pi, yes? So जब ये pi रहेगा then f of t is equal to pi basically. तो ऐसा कोई नंबर है जो pi देता है, well we know one such number, that is pi upon 2. तो इसे pi upon 2 पुट करोगे, ये चीज 0 हो जाएगी, so भी pi right there, और ये चीज अपने आप 0 हो जाएगी, right? So pi upon 2 is I think a solution to this equation. ठीक है, तो फिर at pi upon 2 यानी कि at t equal to pi upon 2 अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी है, f dash of t, right? So how do you figure out what f dash of t is? So अपना डेरिवेटिव अपने को लेना पड़ेगा, राइट? सो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस पाई की पावर 2, जो भी ये रहेगा, एंड दैट टाइम्स 2 एक्चुअली, सो 6, एंड देन प्लस 2 माइनस कोसाइन ऑफ x का साइन ऑफ x हो जाएगा, बट पॉजिटिव में, सो प्लस साइन ऑफ x, दैट्स, या ओके, बट द थिंग इज कि एक्चुअली में अपन f ऑफ t की बात कर रहे हैं, सो सॉरी f डैश ऑफ t की बात कर रहे हैं, सो दिस शुड बी द थिंग, and we want this at t is equal to pi upon 2 of course, because तब अपने को x equal to pi मिलता है, मतलब इस इक्वेशन में, so yes we just want right, और by the way pi upon 2 पे ये चीज 0 होने वाली है, we just know that, और pi upon 2 पे ये चीज 1 हो जाती है, so it's going to be 3, so f dash of t is just going to be 3, so 1 upon it 1/3, right? जो कि ऑप्शंस में नहीं है, and that's why I'm just gonna say it's like 1/3 not in options. Okay, next. Let's go to 34. Right. If z is equal to I log of 2 minus, हाँ ठीक है, so it's like iota natural log है ना ये, कि log based natural log, of course. So 2 minus square root of 3 iota, right? That's the way square root is defined. So square root of negative 3 is defined as square root of 3 iota, right? So ये तो easy है, it's just इसकी जो आर्ग्यूमेंट रहेगी अपने को बस उतना ही देखना है। एक काम करो ना, वो जो 2 है वो निकाल दो यहाँ से, जस्ट 1 माइनस स्क्वायर रूट 3.2 आयोटा, व्हाटएवर, सिर्फ उतना ही खराब है ये। द थिंग इज कि जो tan वैल्यू रहेगी वो स्क्वायर रूट 3.2 है, और ये चीज निगेटिव है, राइट? सो और ये चीज पॉजिटिव है, सो अपन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, राइट? एंड देन क्योंकि अपन नेचुरल लॉग, और मैंने इसमें पूरा मतलब वीडियो क्रिएट किया है कि नेचुरल लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपन कैसे ढूंढते हैं, बट उसमें मैंने अज्यूम किया था कि जो अपन रेंज रहेगी आर्गुमेंट की, दैट विल गो फ्रॉम 0 to 2 पाई, बट एक्चुअल डेफिनेशन में इट गोज फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई, सो वो चीज अपने को यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या रहेगी? इट विल बी नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2, राइट? अपने को वो चीज पुट करनी है। ओके, सो दिस विल बी आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 3, which is square root of 7, and then e power negative iota tan inverse of square root 3/2, right? फिर नेचुरल लॉग का रूल यूज करके अपन इसको आयोटा टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 7 प्लस प्लस 7 8 है, राइट? सो नेगेटिव आयोटा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2, इस टाइप से देख सकते हैं। So then this will be basically a positive tan inverse of square root 3/2 of plus iota natural log of square root 7, which is like iota upon 2 natural log of 7. Yeah, that's good enough. So it will be like this, right? So this is equal to z. Oh, come on, seriously, cosine z is what? Cosine of this whole value. Seriously, that's what you want? Oh god, ऐसा डायरेक्ट बोला था ना तू, मतलब तो ये तो इजी है यार, ये तो काफी इजी है। थिंग इज कोसाइन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड लाइक दिस, e पावर आई जेड प्लस e पावर नेगेटिव आई जेड एंड नथिंग अपॉन 2। सो ये जो पूरी चीज थी गंदी सी, उसको इसमें पुट कर देना था डायरेक्टली, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को। मुझे लगा कि अपन को एक्चुअली जेड ढूंढना है, बट नहीं। सो देन इट्स जस्ट गोना बी लाइक e पावर सो आई जेड आयोटा टाइम्स ये चीज है कि नेगेटिव में चली जाएगी, और यहाँ पे नेगेटिव आयोटा तो पॉजिटिव हो गया, इन एनी केस वो सिमेट्रिक ही है, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है। सो नेचुरल लॉग ऑफ ये सारी चीज यानी कि क्या हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एक जगह पे हो जाएगा,
एंड देन यहाँ पे होगा +1/2 -√3 आयोटा। तो मैं उसको 2 + √3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दिस विल बी लाइक 2² plus √3 का square is like 7, and then it's going to be 2 +√3 iota, and all of that upon 2, of course, right? Yeah, I guess that should do it. So ये cosine z की वैल्यू है। हाँ, that's a complex value though. But wait, what? 2 -√3 iota. It's got to be like that. See, conjugate से multiply किया। I mean, okay, अगर ये 7 दे रहा है, that's like, okay, that's really bad. You definitely don't want to be doing that. क्या गड़बड़ हो गई इसमें? राइट, तो नेगेटिव 1 आया इसलिए अपन ने 1/में ले लिया। नो बिग डील, राइट? दिस शुड हैव वर्कड। व्हाई डिड इट नॉट? लुक, ये चीज, दिस इज जस्ट ऑफुल। अच्छा, अगर ये सिर्फ 2 + √3 आयोटा देती समहाउ, यू नो, समहाउ, क्या बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी ना ऐसा होने वाला है कुछ भी। अगर ये जैसे हो गया 2 + √3 आयोटा होता, देन दिस वुड बी लाइक, नहीं, तुम स्टिल 2 - √3 मल्टीप्लाई करते हो, वो स्टिल उतना ही खराब होता ना। या मतलब यहाँ पे 7 आता स्टिल। या सो वो तो अपन चेंज नहीं कर सकते। एक इसमें नेगेटिव आ रहा है और एक इसमें पॉजिटिव आ रहा है। नो बिग डील, राइट? दिस शुड बी द थिंग। और ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें काम नहीं, नन। ए का एस, राइट? आई मीन आई कैन जस्ट ब्लाइंडली से कि नन इज द वैल्यू, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स लुक एट दिस, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, सो इट हैज टू बी लाइक दैट। ठीक है, ये अजीब है। सो मतलब मोस्ट लाइकली उन लोगों ने टू माइनस उनको लगा होगा कि यार 2 - हाँ, कि वो चीज का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो लोग पागल हो गए थे। ओके, नेक्स्ट बी। इफ जेड क्यूब प्लस, ओके, ये जो चीज है दैट्स इक्वल टू 0 हैज वन रियल रूट एंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इज। अच्छा, इसका एक रियल रूट है, देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इज, सो वन रियल रूट, बाकी रूट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए। -1 + I आयोटा, यू आर सेइंग जेड क्यूब प्लस, इसके 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स होने वाले हैं एंड यू आर सेइंग इट ओनली हैज वन रियल रूट। 3 + 2 iota, why is that the thing? It's just some kind of constant number, अपने को उसका इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं एक्चुअली। Okay, think. अगर अपन इसके सिर्फ रियल रूट की बात करें, राइट, तो सपोज तुम्हें एक रियल रूट मिलती है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी? तो दिस विल सेटिस्फाई एक्स क्यूब प्लस 3x - 1 इज इक्वल टू 0, एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो 2x प्लस a इज इक्वल टू 0, मतलब कि राइट, x would just be -a/2. Yeah, so that will be the only real root actually. I mean, okay, that's actually, yeah, that's to be expected. इसी एक ही रियल रूट है। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a मस्ट बी, हाँ, तो ऐसे और रूट तो हो नहीं सकते। ये अगर और इसके दो, जैसे दो रियल रूट है, तो फिर दो x वैल्यूज के लिए ऐसा हो रहा है, बट इसका मतलब ये दोनों x वैल्यूज इनफैक्ट सेम ही है। मे बी वो रिपीटेड रूट्स है, सम काइंड ऑफ क्यूब दिस थिंग इज, ऐसा हो सकता है, राइट? ओके, इन दैट केस अगर ऐसा हो रहा है, देन दिस थिंग कैन बी, ओ, इसको बाय द वे अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, आई थिंक, शायद से, राइट? या सो एक्स क्यूब प्लस 3x, ओके, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। 3x - 1, isn't that the thing? Yes, it is. X cube plus 3x - 1 is equal to 0. So क्या इसमें अपने को रिपीटेड रूट्स मिलने वाले? इसको इनफैक्ट इसके लाइक कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? कोई इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन है? मुझे तो कोई ऑब्वियस सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव होगा 3x² + 3, राइट? तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि
इसका जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें राइट दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा और एक रियल रूट आएगी राइट. सो oh this is nice of course. So ये जो चीज है it satisfies this thing. A is equal to negative 2x और अपने को चाहिए लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ A कैन बी. अच्छा so you are saying कि minus 2x जो है that has a least integral, so it actually has a least value basically. मतलब 2x has a maximum value, that's what you are saying. So 2x की maximum value क्या है given that this thing happens. ये कैसा क्वेश्चन हो गया. x cube plus 3x इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, that's the thing. So you know need infinity फिर चलते जाओ. इसकी रूट्स देखते हैं. अच्छा कब ये नेगेटिव होने वाला है. what about -1 -1 पे -1 plus 3 minus 1 यानी कि सॉरी -3 minus 1 राइट. दैट्स व्हाट मीन नेगेटिव. और 1 पे 1 प्लस 3 minus 1 तो फिर वो पॉजिटिव हो गया. सो -1 to 1 में कोई तो भी एक रूट रहेगी. 0 पे क्या -1 हो रहा है. सो 0 to 1 में इनफैक्ट एक रूट आएगा और वो एक ही इसका रियल रूट आएगा. सो जो भी रियल रूट है दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन राइट. बट इसका तो एक ही रियल रूट है मतलब और वो है 0 to 1 में. सो ऑफ कोर्स ये जो x है 0 to 1 कुछ तो भी एक नंबर है राइट. It's like saying negative a upon 2 is some not equal to exactly less than 0 and for exactly bigger than 0 and this is exactly less than 1. Yeah, that's the thing. So right just means 0 is bigger than a is bigger than negative 2. So इसकी minimum value क्या होगी. Least integral value of a it can only be -1 right. So for example if a is -1 then that's like saying 1 upon 2 is a root of this thing. Is it a root. 1 upon 8 plus 3 upon 2 लग तो नहीं रहा है मुझे. Yeah, no it's not. हाँ मीन कोई वैल्यू है ही नहीं. कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a के लिए ऐसा होता ही नहीं है. दैट्स द थिंग. ऐसा कोई इंटीजर नहीं है a जिसके लिए ऐसा होता हो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट. ऑफ कोर्स दैट मस्ट बी द केस. इसका एक ही रियल रूट आ रहा है और वो बहुत गंदा वाला है. सो नहीं जस्ट एक एग्जिस्ट नहीं करता है. ऐसा कोई इंटीजर नहीं है a जो कि एग्जिस्ट करता हो. लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a. Do you mean the floor function of a? Okay, that we still actually do not know. I don't know यार. तुम -1 थोड़ी ना डायरेक्टली पुट कर सकते क्योंकि पता है कि -1 काम नहीं करता. इट शुड बी नन ऑफ दीज. कोई है ही नहीं वैल्यू. ओके जस्ट गोना राइट दैट डाउन. नो सच a exists. ओके सो इसका रीजन भी निकालते हैं. a belongs to -2, 0 कहीं तो बीच में रहने वाला है. Yeah, that's the whole thing. काश नो डायरेक्टली इनफैक्ट यू नो देख पाता कि इसमें रूट क्या है. बट इट्स इनफ फॉर अस. अपने को पता है कि -1 काम नहीं कर रहा और कोई नंबर तो है नहीं इसमें जो इंटीजर है. सो दैट्स इट. a equal to -1 doesn't work. That should be it. Okay, next c. c is if for z as real or complex. Okay, ये जो चीज है that's equal to c0 plus c1 z square plus c2 z power 4. अच्छा सारे z square के ही है ना. That's why then c0 minus c1 plus c2. अच्छा तो इसमें plus of course just put z is equal to iota in there. So c0 फिर minus z minus c1 फिर plus c2 चलते जाओ. Yeah, this should actually work. Just put iota in there. This will be 1 minus iota plus 1 की power 8 basically, right? I think so. So basically 2 minus iota की power 8, which is इसका magnitude क्या है? It's square root of 5. So square root of 5 and then e power. Or by the way, negative is like okay, negative tan inverse of 1 upon 2. Oh, that times iota of course. All of that to the power of 8. Yes. Yeah. ओके पर आपने को ढूंढना क्या है. हाँ आपने को इसकी वैल्यू ढूंढनी है बेसिकली. एंड ओके काइंड ऑफ नो कि दिस मस्ट बी अ रियल नंबर राइट. या व्हाट इज दिस tan inverse of 1 upon 2. We don't know what actually happens. Okay. Wait, should be -1
Oh, sorry. क्या कर रहा हूँ मैं? Why is this? Why am I putting its iota? No. It has to be -1. Sorry for that. Just put n equal to iota 1 minus 1 plus 1 हो जाएगा. So ये 1 की power 8 is going to be 1 of course. So ये जो पूरा value is going to be 1. So C का तो आंसर at least आ रहा है. Okay, D. If Z1 का magnitude is 1, Z2 का magnitude is 2, Z3 का 3 है and this thing is happening, the value of Z1 क्या है ये? अच्छा conjugate से. Well, you know, I mean, उसका conjugate का फर्क नहीं पड़ रहा है. वैसे तुम Z1 plus Z2 plus Z3 का magnitude ढूंढ रहे हो basically, right? Yeah. Okay. Oh, you know what? I'm starting to think of something. Uh, right. So Z1 का magnitude 1 है, Z2 का magnitude. Wait a second. इसका magnitude क्या होगा? इसका magnitude होगा 9 and then 1 times 2 is ये अजीब है. Right. You know what I'm thinking? I'm thinking कि इसको ऐसे तो 9 Z1 Z2 Z3 upon Z3 right? और फिर ऐसे ही सारे के सारे और फिर मैं Z1 Z2 Z3 बाहर निकाल सकता हूँ right? Yeah, that would work basically. और Z1 Z2 Z3 का magnitude क्या होगा? It will just be 6. So 6 and then magnitude of 9 upon Z3. Okay, plus कहाँ पे चला गया? 4 upon Z2 plus 1 upon Z1, right? अब Z3 का magnitude क्या है? That's just 3. So thing is कि ऊपर नीचे Z3 का conjugate से multiply करूँ तो यहाँ पे मुझे 9 मिल जाएगा और ऊपर मुझे सिर्फ Z3 मिलेगा. So it's like saying 6 Z3 conjugate plus Z2 conjugate plus Z1 conjugate, right? अच्छा इसलिए इन लोगों ने conjugate मतलब वो familiar basically hint कर रहे हो, right? Yeah, that's equal to 12. So इसकी value क्या होगी? 2. So Q is the answer. Next is 35. Vertices of a triangle are 1, 2, 3, 4 and 2, -4. करना क्या आपको? अच्छा देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं. अच्छा नहीं, right? Triangle is obtuse angle inside a circle. Centroid lies on this thing. अच्छा इसका centroid अपन easily calculate कर सकते हैं. क्या हो जाएगा? 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6 upon 3 is supposed to be 2 and this thing is 6 -4 तो सिर्फ 2 हो गया, like 2/3. So 3y that's going to be 2, that's equal to 2. Yes, it lies on that. So इसका s तो है at least. Okay, और क्या क्या है? 1, 1 lies inside the triangle or something. क्या हो गया ये? Sorry. So let's just try to plot this out actually. So 1, 2 is somewhere. ध्यान दो यार, प्लॉट क्यों करना? एक काम करते सबसे पहले तो अपन 1, 1 के बारे में देखना चाहते हैं तो with respect to that अपन ये सब करेंगे, right? Yeah, that's one way to think about it. So with respect to that, it's like 0, 1 or 2, 3 or 1, -5, right? These are the things. Of course, I think शायद से कोई का रोटेशन मैट्रिक्स अपन लगा के इसको चेंज कर सकते हैं, but like let it be whatever. So ये अपने पॉइंट्स है when seen by 1, 1. अब मैं इसको प्लॉट करने का ट्राई करता हूँ. So 0, 1 is over here. 2, 3 is somewhere over there. Somewhere over there. फिर 1, -5 will be. Oh, by the way 1 है और ये 2 है, जो भी है. 1, -5 is somewhere over there basically. So right, अपने को ये एक पॉइंट चाहिए, अपने को ये एक पॉइंट चाहिए और अपने को ये एक पॉइंट चाहिए, right? But as you can see कि ये काम नहीं करता है. This actually does not lie inside a triangle, it lies outside a triangle. So R is not correct. Triangle is obtuse angle. Yeah, it looks like it is actually obtuse angle, right? Yeah, मतलब ये जो चीज़ है, okay, whatever. To actually see कि वो है कि नहीं, अपन सब कुछ with respect to 1, 2 अपने को डायरेक्ट चीज़ है, right? So it's like 0, 0 और फिर ये हो जाएगा 1, 2 और this will be 1, -6, right? So अब तो easy है. 1, 2 is just somewhere over there. Then 1, -6 is here. ये जो एंगल है ऑलरेडी π/4 से बड़ा है and then ये एंगल भी π/4 से बड़ा है. So what can we conclude कि ये पूरा एंगल π/4 से बड़ा होगा. So it's an obtuse angle. So Q is correct.
लैम्डा लैम्डा तो कुछ इसको एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्या बता रहा है? ओके दैट्स इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बी। इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस देन क्या? अच्छा ओके सो ट्रायंगल ऑफ ट्यूस है क्या है वो अपने को देखना है राइट। ये तो बुरा हुआ। सो ओके साइड्स का बताया गया है। चल लैम्डा इसमें भी नहीं है राइट। ओके व्हाटएवर। 1, 1 lies inside the triangle. I mean that's not so easy to figure out. X plus y is equal to 3 is something like this, or 3x minus 5y plus 7 is equal to 0. So negative 7 third or positive 7 fifth, right? Negative 7 third, positive 7 fifth. 7 fifth versus catch it should be negative 3 right there. Sorry, it should be positive 3 right there. So 7 fifth is of course smaller than that. So or negative 7 third is also less than 3. So I think ऐसा कुछ भी रहेगा. So ये है एक और फाइनली क्या है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू, क्या कोई ऑब्वियस सोल्यूशन है इसके? फॉर एग्जांपल नहीं नहीं है इसका ऑब्वियस सोल्यूशन कोई भी राइट। सो x इज इक्वल टू like okay y whenever it's 0 x will be minus 1 which is it's like it's at least smaller than this thing so whatever। okay यहाँ पे uh, just let's just go through it or when what was I doing when x is 0 y is supposed to be 1/3 right so y 1/3 somewhere over here ये तो बहुत ही गंदा ट्रायंगल बन रहा है something like that हाँ थोड़ा सा अच्छा बना देना इसको ओके सो ये तो भूल जाओ ये एकदम लास्ट में करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट 3x minus 5y plus 7 equal to 0 so जब भी y 0 then x must be negative 7 third so negative 7 third is slightly bigger than 2 so ये 1 2 3 है slightly bigger than 2 कहीं तो भी यहाँ पे रहेगा आई थिंक या negative 6 third is almost 2 so ये ऐसा रहेगा आई थिंक या बस 1/3 मोर और y पे क्या रहेगा 7 fifth is more than 1 सो यहाँ पे कहीं तो भी बस मैंने छोटी स्केल बना दी है इसमें सो लेट्स से इतना पूरा मुझे एरियाज नहीं पता है समवेयर ओवर देयर दैट शुड बी द 1 मार्क एंड दिस शुड बी द 2 मार्क ये नहीं थोड़ा सा बड़ा हो गया राइट सो 1 से थोड़ा बड़ा है ये ओके तो यहाँ पे कहीं तो होगा से इट आउट दिस शुड बी द थिंग दिस शुड बी द थिंग ओके कूल और क्या देखना है आपने को और ये लाइन राइट सो x माइनस 3y प्लस 1 सो नेगेटिव 1 एक पॉइंट है और कौन सा पॉइंट है एक 1/3 सो 1/3 इज ओवर देयर सो ये एक लाइन रहेगी ये गंदी बनाई मैंने समथिंग लाइक दिस या दिस लुक्स गुड दैट्स आवर लाइन ओके सो ये चीज और x प्लस y इज 3 यानी कि यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा वी डोंट केयर अबाउट दैट एक्चुअली समथिंग लाइक दिस जो भी है right we want to see if 1 comma 1 is in there so right 1 comma 1 is somewhere over here अच्छा 1 comma 1 और ये जो लाइन अपन ने सेकंड वाली जो लाइन थी x minus 3y plus 1 equal to 0 अगर मैं इसमें 1 comma 1 पुट करूँ what do I get इसकी negative 1 right so it's on the negative side of course जब तुम x को बड़ा करते हो okay think oh god is it on the upper side or lower side x minus 3y so वो जो वेक्टर है 1 negative 3 is going like 1 negative 3 ऐसे जा रहा है राइट सो ये वाली साइड पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव बोला तो एक्चुअली ऊपर है राइट सो ये ऊपर है इसके नाइस और इसमें पुट करके देखते हैं 3 minus 5 plus 7 यानी कि इन एंड पॉजिटिव हो रहा है और 3 negative 5 is going like this so पॉजिटिव मतलब वो भी अंदर है so yes 1 1 is inside the triangle so C का अपन R बोल सकते हैं and from the looks of it वो ऑब्ट्यूज मुझे दिख रहा है यार so मैं ये भी बोल सकता हूँ triangle is obtuse angle so Q and R looks correct but centroid के बारे में क्या बोल सकते हैं does centroid lie on y equal to 2/3 so for the centroid ये सारे इनफैक्ट इक्वेशंस नहीं सारे कितारे नहीं है कुछ और ही बोल रहा हूँ मैं
थिंक अपने को इसलिए वाई कोऑर्डिनेट का दिखना है, राइट? तो फिर ठीक है ना, इनकी डिसीजन पॉइंट्स बेसिकली निकाल लेने हैं, तो उसे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है वैसे। सो पहले दो का करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। राइट, ठीक है, करना ही पड़ेगा ना, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स। सो पहले दोनों का करते हैं, राइट? विल जस्ट डू 3 टाइम्स ऑफ दैट, सो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 5y is equal to, sorry, plus 7 is equal to 0, negative 7, whatever. Subtract it out. So 8y is equal to 10, y is equal to 5 upon 4, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद में इन दोनों का करता है x plus y equal to 3, और ये गंदी सी चीज, सो जस्ट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर, गेट 4y is equal to 2, सॉरी ये नेगेटिव 1 था, सो 4 आएगा, y equal to 1, राइट? और फिर फाइनली इन दोनों का करना आपने को, which is, तो ये यहाँ पे कहीं तो भी आने वाला है, देखने से लग रहा है दैट y is close to negative 1 or something, whatever. अपने को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इनफैक्ट, सो विल हैव टू डू इट। ओके, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे नहीं है, so उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी 3x माइनस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा 3x माइनस 5y प्लस 7, सब्ट्रैक्ट 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू माइनस 1। तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे, और सिर्फ 5/4 अपॉन, हाँ तो वो इस पे नहीं है, सो एस इज नॉट करेक्ट फॉर दैट, एंड देन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज, तो अपने को दिख रहा है यहाँ से, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल यू रियली नीड। मुझे कैसे पता ऑब्ट्यूज है? क्योंकि ये जो एंगल रहेगा इनके बीच का, सो ये वाले इसका स्लोप क्या था? इट वाज, ये जो पहली लाइन थी वो है, राइट? सो इसका इसका स्लोप क्या है? 3/5, और इसका स्लोप क्या है? -1। उनके पीछे एंगल देख लेते हैं, राइट? सो 3/5, ओके, 3/5 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, हाँ ठीक है, 1 माइनस 3/5 हो जाएगा, सो दिस विल बी 8 अपॉन 2, यानी कि 4 इज द tan of angle between, so acute angle जो है that is actually like, उसका tan जो रहेगा वो 4 रहेगा, राइट? या मतलब ये जो एंगल है that's gonna be 4, yes, so right, wait, how do we know कि obtuse है कि क्या है? Is this angle okay less than pi upon 2? Yes, it's less than pi upon 2, and that just means like this angle must be bigger than pi upon 2, right? Oh yeah, so acute angle तो इनमें से कोई ना कोई तो एक रहेगा ही। The thing is, ये जो अपन ने किया है ये क्या है? It's going एंटी क्लॉकवाइज, अपने को 4 मिल रहा है एंगल, राइट? अगर अपने को नेगेटिव मिलता तो मतलब कि अपन क्लॉकवाइज जा रहे होते, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे -4 मिलता तो उसका मतलब क्या होता? उसका मतलब होता कि वी आर एक्चुअली हैविंग पाई प्लस, सॉरी, जो अपना अपन एंगल जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, सो गोइंग फ्रॉम द वन विथ -1 टू द वन विथ 3/5, अगर जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो अपने को पाई प्लस समथिंग मिलता है, राइट? सो पाई प्लस 4, तो इन दैट केस वो एक्यूट होता, क्योंकि ये वाला जो एंगल रहेगा नेगेटिव, सॉरी 3/5 टू क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको क्या हो गया, 3/5 टू -1 वाला जो एंगल रहेगा वो पाई माइनस वो एंगल है, दैट वुड बी एक्यूट, बट इस केस में नहीं हो रहा है, सो इट इज एक्चुअली ऑब्ट्यूज, या, सो दैट्स इट। नेक्स्ट 36 का, सॉरी 35 का सी करते हैं। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली, तो अपन सेंट्रॉइड ढूंढ सकते हैं, जस्ट दैट्स ऑल यू कैन डू, उसके अलावा आपने कुछ नहीं बताया, या क्या इससे ज्यादा अपन कुछ पूछ सकते हैं? ऑर्थो सेंटर और सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में बताया, उसके अलावा आपने को क्या बताया? कुछ भी नहीं। ये क्या ऐसा हजारों ट्राइंगल्स नहीं होगी जिसका, राइट? मतलब जो सर्कम सेंटर है उसको फिक्स कर डालो एस 0,0, और फिर तुम्हारे हजारों अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स हो सकते हैं जिनका सेम ऑर्थो सेंटर हो, राइट? कि नहीं, तरह से एक सर्कल है, कहीं तो भी तो ऑर्थो सेंटर है तुम्हारे, ओके, राइट? और ऐसा मल्टीपल ट्राइंगल्स हो सकते हैं ना जिनका इनफैक्ट ये हो, तो कोई भी एक रैंडम लाइन ले लेते हैं, इससे लेट्स जस्ट से कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है कोई तो भी एक साइड को, राइट? सो वो जो साइड रहेगी दैट्स गोना लाई ऑन दीस टू, तो ये वाला जो पॉइंट है वो अपन फिक्स कर दिया इन दैट केस, राइट? ओके, बेस जो रहेगा वो अपने को
Yeah, we should select that very, दो दो इनफैक्ट पॉइंट्स का अपने पास ये पॉइंट का अपने को पूरा का पूरा फ्रीडम दिया हुआ है कि फिर कौन सा वाला पॉइंट चूज करना चाहते हैं, राइट? ओके। और ये जो अपनी साइड रहेगी वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। सो कोई तो भी ऐसा एक, राइट, सो या कोई तो भी ऐसा तुम चूज हमेशा कर पाओगे सच दैट ये एक्चुअल में ऑर्थो सेंटर हो, राइट? या राइट, सो सच दैट इसका इसकी जो लाइन इसे पास होती हो दैट्स लाइक एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस थिंग, या सो दैट दैट। हाँ, तो आई थिंक थोड़ा बहुत फ्रीडम है इसमें। तो मैं एटलीस्ट एक पॉइंट का तो फ्रीडम है, दैट जस्ट मीन्स कि हजारों तरह से वो ट्रायंगल क्रिएट कर पाओगे, तो फिर तुम्हें एक्चुअली पता नहीं कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है कि क्या है। हाँ, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर क्या है? सर्कम सेंटर ये चीज है, विद रिस्पेक्ट टू सर्कम सेंटर द ऑर्थो सेंटर इज लाइक, सब्ट्रैक्ट करो, जस्ट गेट -3, 2 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। सो द यूजुअल डील ओ G and H. So GH is actually twice of OG, right? Yeah, so just 1/3 of OH vector, that's going to be OG vector. So इसका अपन 1/3 कर सकते हैं, जिसका भी -1/2 का -1/3, और फिर ये जो चीज थी वो इसमें ऐड कर दो। This is actually like 4/2, which is 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2/3. So does that lie on this line? Yes, it does. Right. Yeah, so S is correct for this guy. So C का S. कुछ और इसका नहीं पता है अपने को, 1/1 lies inside triangle. I don't know. Not necessarily. ओ, अपने को इनफैक्ट और फ्रीडम दिया हुआ है, बिकॉज अपने को सर्कम सेंटर पता है, सर्कम रेडियस नहीं पता है, राइट? तो सर्कम रेडियस अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, राइट? तो अपने को काफी सारा फ्रीडम एक्चुअली दिया हुआ है। इट्स नॉट कि कोई एक स्पेसिफिक ट्रायंगल होने वाला है, देन या अपन ये इससे कह रहे में कुछ भी नहीं बोल सकते इनफैक्ट। हाँ, फाइन। ओके, लाइक ऑप्टिस एंगल क्या पता, होगा भी नहीं भी होगा, वी डोंट नो। ओके, सो दिस इज इट। सी अपन ने कर लिया, लेट्स गो टू डी नाउ। T is equation of the sides of a triangle are this and that. अच्छा, 3x-4y, यार वापस रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गया। ओके, ये तो और गंदे नंबर दिए इस केस में, तब तो भी थोड़े से अच्छे दिए थे, अब ऐसे गंदे वाले दिए, राइट? 3x-4y, think, isn't it like, okay, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, it's like saying 3 and -4 dot r vector is equal to 13, or 8 comma -11 times r vector is equal to 33, or 2 comma -3 and then r vector is equal to -λ, whatever, that's उसका वेक्टर फॉर्म। बट आई एम थिंकिंग इसकी अगर मैं इस पे सो हर एक पॉइंट पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूं सच दैट ये जो वेक्टर है दैट गेट्स मैप टू, आई डोंट नो, 1,0 और व्हाटएवर समथिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट? और आर वेक्टर इज स्टिल आर वेक्टर नोटेशन वाइज, या सो जो भी एक्स वाई था वो स्टिल एक्स वाई ही है, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट? या मतलब अभी वो आर वेक्टर है, बट वो अब चेंज, कैसे बताऊं मैं? तुम्हारा जो पॉइंट है जो कि इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तुम्हारे इक्वेशन चेंज हो गए और तुम्हारा पॉइंट भी चेंज हो गया, बट वो स्टिल सेटिस्फाई करता है। दैट्स अ थिंग, राइट? दैट्स हाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स, बिकॉज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सारे इक्वेशन भी लीनियर है, दैट्स व्हाई, या राइट? सो आई एम थिंकिंग ऑफ अ some kind of linear transformation की 3, -4 जो है that just gets mapped to, oh, why even do that, just go through complex numbers, right? Yeah, so फिर अपन आराम से वो रोटेशनल मैट्रिक्स को इमिटेट कर पाएंगे थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? सो जस्ट just gotta divide this thing by 3, -4, और फिर अपने को वो नए जो वेक्टर्स है वो मिल जाएंगे। यस 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 यस, और स्टिल वो डॉट प्रोडक्ट रहेगा, अपन ऐसा कुछ उसका चेंज नहीं कर रहे, राइट? जस्ट अपने को सिर्फ ज्योमेट्री दिख, ओ ओ 1,1 उसके अंदर है कि नहीं, फिर दैट वी डू नॉट नो। उसके लिए फिर अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 3, -4 से, राइट? सो डिवीजन बाय और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट लाइक रोटेशन, या फिर तुम एक रोटेशन मैट्रिक्स देख सकते हो कि तुम रोटेशन भी कर सकते हो, तुम स्केल अप भी कर रहे हो। सो
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बिकॉज इनवर्स ऑपरेशन है, तो फिर इसके लिए तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा त्रिकोणिक फोर्स से, क्योंकि मैं हर जगह पे डिवाइड कर रहा हूँ. Yeah, that should be the thing, I think. Yeah, right, right, right. और सिमिलरली यहाँ पे मुझे आई थिंक आई हैव टू मल्टीप्लाई इट आउट और समथिंग. हाँ, वेट नहीं, 3y is equal to 2, so that's like saying 0 comma 3 dot r vector is equal to 2, right? So that's also okay, तो इसको भी मुझे इनफैक्ट रोटेट करना है, राइट? इट्स वियर्ड, राइट? मतलब ये जो पूरा का पूरा है अपने को सभी इसको रोटेट करना पड़ेगा, इन चारों इसको, राइट? सो क्या कर रहे हैं अपन? ऑफ कोर्स 3 माइनस 4i से डिवाइड कर रहे हैं. बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक डूइंग 5 एंड देन 3 प्लस 4i टाइम्स की सारी चीज. या सो इसमें तो जब अपन करेंगे जस्ट गेट 1 एज द थिंग. सो दिस विल बी लाइक, सॉरी 1 नहीं, क्या करा था मैं? 1 इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट एक्चुअल में क्या मिलेगा अपने को? 1,0 डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू 13. सो ये ऐसा बन जाएगा. फिर अपन इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को, विल सी व्हाट वी गेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 24, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? -11, और नेगेटिव होने वाला है लाइक +44, एंड देन ये सब अपॉन 5 आने वाला है, राइट? रिमेंबर दैट. और जो दूसरी चीज रहेगी फॉर द इमेजिनरी पार्ट, 32 माइनस 33, राइट? एंड दैट टाइम्स आर वेक्टर इज इक्वल टू 33. दैट्स थिंग. सो वो 5 को आप मल्टीप्लाई कर डालना, क्या जा रहा है? इट्स गोइंग टू बी जस्ट 68 कॉमा -1 डॉट आर वेक्टर. That should be equal to 15 is like 165 whatever. हाँ, ये तो बड़े गंदे नंबर आ रहे हैं यार. जो भी है, क्या ये अच्छा आइडिया था? शायद से नहीं, शायद से नहीं था ये अच्छा आइडिया. ये ना स्टिल अपने को काम तो उतना ही अपने रोटेट कर भी दिया, बट ये गंदे नंबर आ रहे हैं. सो अपने को स्टिल उतना ही काम करना पड़ेगा. सो ये अच्छा आइडिया नहीं है. जस्ट गेट इट ऑफ दिस थिंग. जो अपने लास्ट टाइम किया था वैसे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, कि अपने को देखना पड़ेगा इस, या लाइक ग्राफ इट आउट और समथिंग. ट्रायंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल और समथिंग. ओह गॉड, फिर हर एक का एंगल चेक करो, क्या पागल बने यार. तो दिस इज नॉट वर्थ डूइंग इट. कोई अच्छी मेथड क्यों नहीं है चीज करने की? ओह एंड बाय द वे लैम्डा, या लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7. Why can't it be -7? क्यों, क्या हो रहा है ऐसा होने से? If lambda is -7, then it's 3 over there or something. It's like 8 and 3. Okay, so 2 times of that plus this guy. Oh, okay, so -26 and then -7, so -33. And that's why, right? So lambda का -7 रहा, then 2 times of this equation plus this equation gonna give us this equation. मतलब ये चीज रिडंडेंट हो जाएगी. तो बेसिकली सिर्फ 2 लाइंस है, सो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट रहने वाला है. तो वो ट्रायंगल कहाँ पे बना? ओके, सो P इज करेक्ट आई थिंक फॉर दिस गाय. स्टिल उतना ही बुरा है अभी. ग्राफ तो करना ही पड़ेगा अपने को, इसका और कोई तरीका नहीं है. So first of all, 3 minus 4y minus 13 is equal to 0, right? So 3 comma -4 is going like this. तो ऐसा जा रहा है, राइट? ये पूरा रीजन पॉजिटिव होगा, और दिस इज इक्वल टू 13 और समथिंग. सो चलो देखते हैं कि सब क्या होगा इसका. ये कितना घटिया हो रहा है यार. या ठीक है, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? 13/3 विच इज समथिंग लाइक 4 पॉइंट समथिंग. इसको पहले तो मैं मार्क्स लिख लेता हूँ. 1 2 3. ये किस टाइप का क्वेश्चन है? मतलब इसको तुम नॉर्मली सॉल्व कर ही नहीं सकते हो ना. तुम्हें एक्चुअली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज नॉट एफिशिएंट. किसी को अगर इसकी अच्छी मेथड बताओ मुझे प्लीज बताना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. पहले तुम्हें क्या करना है? वी वांट टू हैव, मुझे अगली बार से यानी ग्राफ पेपर लाना पड़ेगा हर जगह पे. या ओके, सो स्टार्ट में क्या है? पहला अपना लाइन क्या है? सो 3x minus 4y is equal to 13. So 13/3 is 4 point something. So यहाँ पे कहीं पे भी रहेगा. एंड
क्या हो जाएगा, -13/4, दैट्स द y इंटरसेप्ट, सो 13/4 इज 3 पॉइंट समथिंग, सो ये एक लाइन रहेगी। मुझे क्यों लग रहा है कि अपने को बहुत ही ज़्यादा इसमें चीर फाड़ करनी पड़ेगी ग्राफ की, तब अपने को एक्चुअली कुछ नहीं मिलेगा सही से। कम ऑन, एक सारी लाइन ग्राफ की होती क्या है इससे, क्या यार। ओके दिस इज नाइस। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी थी, अब मार्क भी कर डालते इसको। दिस वॉज जस्ट 3x - 4y = 13। ओके, दूसरा, यू नो, ओके यू कुड जस्ट एक्चुअली फिगर आउट कि पॉइंट्स कौन से है, कौन सी फिगर आउट कि पॉइंट्स कौन से है, शायद से ये इजी हो जाए करना, राइट, हो सकता है, आई थिंक इजी हो सकता है एक्चुअली, विल फिगर दैट आउट लेटर ऑन। सो फिर है 8x माइनस, क्योंकि अपने को पहले तो ये 1,1 का देखना है कि क्या वो इनसाइड है कि आउटसाइड है कि क्या हो रहा है इसका। अपने को सेंट्रॉइड का भी देखना है ना, just gonna take forever. Okay, 8x - 11y - 33, so y intercept 3 है, that's kind of nice, sorry -3 है, which is over here। मुझे लगा ही था यार ये पूरा ग्राफ ही यानी बहुत ही गंदा बना है। uh, और x का इंटरसेप्ट क्या है, 33/8, which is something like 4 point something, guess what, भाड़ में जाए, नहीं, just not doable, it's not doable। अब देखो एक्चुअली पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, उससे अपन सेंट्रॉइड ढूंढ सकते हैं, बट 1,1 उसके अंदर है कि नहीं है, दैट्स स्टिल, वेट अ सेकंड, 1,1 इज जस्ट ओवर हियर, और ये जो लाइन थी ये इसके पास में की थी बहुत, राइट, सो उसके अंदर का रीजन जो था सिर्फ उतना ही अपन इनफैक्ट ले सकते थे। और वेट, जो लास्ट लाइन थी वो कौन सी है, 2x - 3y + λ = 0, सो नो, चलिए तो अजीब है, लैम्डा इज अ वेरिएबल लाइन, और 2, -3 goes like 2, -3 some vector like this, तो ऐसा, राइट, so some line like that, राइट, इन दी एंड वो इसको कहीं ना कहीं कट करने वाला है, राइट, सो क्योंकि 2, -3 एक्चुअली goes like this, line will be like that। अच्छा, इसका स्लोप क्या है, इनका स्लोप अलग अलग आ रहा है, ओके, या बट द थिंग इज कि जो बीच अंदर का रीजन रहने वाला है, दैट्स द थिंग, राइट, वो सिर्फ अंदर का रीजन जो रहेगा वही पे इफेक्ट, बिकॉज ये -3 था एग्जैक्टली, और ये 4 पॉइंट समथिंग था, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कभी इंटरसेक्शन पॉइंट रहे इसके आगे, सो ये सिर्फ अंदर का जो रीजन है वही अपना ट्रायंगुलर रीजन रहने वाला है, तो 1,1 तो ऑफकोर्स उसमें नहीं बैठता, राइट, या व्हाट डज दैट मीन, या वही होगा ना, 1,1 थोड़ी इसमें बैठने वाला है, इट हैज टू बी लाइक दैट। ओह नो, ओह नो, द थिंग इज, ओह गॉड, तुम्हारे जो जो भी लाइन है, कितना भी वो कम स्लोप हो, जो भी हो, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, कैसी भी लाइन हो, फिर पता नहीं, तुम अगर तुम बहुत लार्ज स्केल पे देखो तो फिर इन दी एंड, फिगरेटिवली बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली वैसा है नहीं, तो इन दी एंड तुम ऐसा देख सकते हो, मतलब ये जो अपन वेरिएबल लाइन है वो ये हो जाएगी, इनमें से कोई तो भी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, वॉट एवर, अगर अपन बहुत यू नो जूम आउट कर डाले तो ऐसा हो सकता है, और फिर ये क्योंकि वेरिएबल है, सो एक्चुअली या वो कंटेन कर सकती है 1,1 को, ओह शिट, सो फिर आर का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज वो होप से नहीं हो सकता है, फिर अपने को जो सेंट्रॉइड देखना है, राइट, सेंट्रॉइड लाइज ऑन व्हाट, या राइट, तो उसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द वाई कोऑर्डिनेट्स एंड देन वी आर गुड टू गो। सो पहले दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दोनों को, यस, अपने को इसको समहाउ रिमूव करना है, ओह कम ऑन थिंक, यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, लेट्स जस्ट से कि पहले इनका एलसीएम क्या होगा, 3, 8 और 2 का, इनका एलसीएम हो सकता है 24, राइट, तो अगर मैंने सब कुछ 24 के टर्म्स में लिख दिया, लाइक 24x, सॉरी 24x -32y minus 8 times of this thing जो भी होता है, which is 8 and 24 104 is equal to 0, right, फिर इसको 24 में कन्वर्ट किया 3 times of that करके, so 24x
माइनस 33y माइनस 99 इक्वल टू 0, राइट। और फिर क्या 2x माइनस 3y वगैरह जो भी रहेगा, यस। सो इसको मुझे 24 में करना था, 12 मतलब कि 24 आ जाएगा पे 24x एंड माइनस 36y, राइट। ओ वंस अगेन लैम्डा इज वेरिएबल, तो वी डू नॉट नो कि वो क्या हो रहा है एक्चुअली में। सो ठीक है, फिर तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अपनी गलत हो गई, बिकॉज अपने को पता नहीं लैम्डा क्या है, राइट। एंड इट विल डिपेंड। तो मैं क्या सोचा था, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ओके अज्यूम कि लैम्डा अपने को पता है ठीक है। सो प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो भी होता है वो थिंग इज कि वी कैन राइट दिस फॉर just right. So y1 x1 y1 will follow this equation and it will also follow this equation, right? तो उनका कोई टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन भी फॉलो करेगा। आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो व्हाट आई थिंक इज लाइक उसको सब्ट्रैक्ट कर डालो। ओके, सो सब्ट्रैक्ट किया, जस्ट गेट -104 प्लस 99 जो भी होता होगा दैट थिंग अपॉन ये चीज। सो सब्ट्रैक्ट करने पे जस्ट मुझे 1 मिलेगा, राइट। ओके, ये अपना लाइक ओके आई मीन ऑलरेडी वो अपने को पता है कि y1 ये ही रहने वाला है, फिर प्लस फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करके। सो अपॉन में 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -99 -12 लैम्डा जो भी होता होगा, एंड देन फिर सिमिलरली अगला वाला करेगा और फिर ये सब कुछ अपॉन 3 कर दिए। सो इन दैट वे अपने को डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में लैम्डा वेरिएबल है, सो हो सकता है कि सेंट्रोइड इस पे हो सकता है नहीं भी हो, तो फिर इन दोनों का मतलब नहीं बनता। लास्ट है ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल और नॉट। नहीं, वेट, इज इट? Okay, okay, it depends. It depends. Unfortunately, कुछ टाइम्स है ऑब्ट्यूज, कुछ टाइम्स नहीं है। Yeah, shit. That's not nice. Right, कुछ टाइम्स ये ऑब्ट्यूज होगा, कुछ टाइम्स नहीं होगा। ये क्यों किया इसने? क्योंकि कैसे ओके तुम्हारे पास में दो ऑलरेडी लाइंस थे, राइट, और फिर तुम्हारी जो लास्ट वाली लाइन थी वो क्या पता कोई भी टाइप के स्लोप की थी, जो भी है जस्ट अज्यूम कि स्लोप ऐसा था उसका। सो इन दिस केस ऑब्ट्यूज तो हो रहा है, यस, बट तुम चलते जाओ चलते जाओ। एक पॉइंट जब ये इससे पास हो रही होगी और समथिंग, ओके यस, लाइक सेम लाइन बट तुम ऐसे पास कर रहे हो। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और क्योंकि ये स्लोप सेम नहीं है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी आगे, राइट। वी कैन से दैट आई थिंक कि ओके नो, फॉर दैट अगर तुम्हें आगे इंटरसेक्ट करना है देन फॉर दैट टू हैपन, ओह गॉड, अच्छा ये डाइवर्ज नहीं होनी चाहिए, राइट। सो ये स्लोप छोटा होना चाहिए स्लोप से। इसका स्लोप क्या है, जो अपनी वेरिएबल लाइन का स्लोप जस्ट 2/3 है, इसका स्लोप है 3/4। सो ये तो छोटा है, ओके। और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 8/11। सो क्या ये इससे बड़ा है? इट्स लाइक सेइंग कि क्या 1/3 इज बिगर देन 4/11, इट्स लाइक सेइंग 11 बिगर देन 12। दैट्स नॉट करेक्ट। सो ये स्लोप छोटा होगा। ओह ओके, सो फिर ठीक है, यानी ये कभी इनफैक्ट इस टाइप से इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओह दैट जस्ट मींस ओके इट इज एक्चुअली ऑब्ट्यूज ऑल ऑफ द टाइम। सो क्यू बोल सकता हूँ मैं, इसका क्यू रहेगा। नेक्स्ट let's go to 36. The coordinates of point on circle x square plus y square minus जो भी है which is farthest from the origin. Seriously, farthest from the origin. Okay, like this and then हाँ, right. So center क्या है, ढूंढते हैं ना, x minus 6 का square plus y minus 2 का square, right, is equal to -30 plus 36 plus because वो 12 था ना, right, it should be working, plus 4 which is 6 plus 4 which is 10, right. Okay, oh god, ये तो स्क्वायर रूट वगैरह में आएगा, दिस इज नॉट व्हाट, दिस इज नॉट नाइस। यहाँ पे 6 स्क्वायर 36 आएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा, राइट, बिकॉज या शिट 2 स्क्वायर आएगा, लाइक 4 plus 36 सपोज टू बी 10, बट 10 तो इस स्क्वायर है नहीं। सो ये क्या हो गया, सपोज टू -30 दो, इसका जो अपोजिट पॉइंट का ये तो काम ही नहीं करेगा, राइट।
और 6,2 इज द सेंटर प्लस, तो 0,0 से इस पॉइंट तक का वेक्टर कितना है 6,2, उसको रिड्यूस करो पहले तो 3,1। अब मुझे ये वेक्टर, उसको पहले तो मुझे यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो लाइक दिस थिंग अपॉन सॉर्ट ऑफ 10। Oh, that's nice. And that times the radius, so radius being in fact somehow sort of 10 है, so बहुत ही बढ़िया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, just get this as thing, so plus 3,1 मतलब कि 9,3, that's the point, so ये क्यों होगा। नेक्स्ट बी करते हैं। If one end of the diameter of the circle is this thing, then the coordinates of the other end is, अच्छा एक सर्कल है उसका डायमीटर का एक एंड दिया है, ओके देन अदर एंड, oh yeah, okay, it's like that. Hmm. This is actually not that hard because x minus first diametrical point का x coordinate फिर x minus दूसरा diametrical point का x coordinate वो रहता है, राइट। सो -4x जो है वो लीनियर टर्म कैसे आएगी, x माइनस 3 टाइम्स x माइनस अल्फा करूंगा, उसमें मैं 3 प्लस अल्फा करूंगा, मुझे 4 मिलेगा, राइट। अल्फा मस्ट बी इन दैट केस जस्ट 1, सो जो दूसरा पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है। सिमिलरली इसमें तो दूसरा पॉइंट जो रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट 2 रहेगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट 2 रहेगा, वो अपन गेस कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। सो दैट इज द थिंग, सो 1,2 इज दिस पॉइंट p। c का करते हैं। c is the center of the smallest circle touching the circles, these two circles is cha. Oh, just find out the radial axis and then lambda times that or whatever, or for उसका जो center है that should actually pass through the radial axis, right? Yeah, या फिर तुम alternatively r को minimize कर सकते हो, that's one way, right? So radial axis में है क्या, subtract कर दो, just get क्या हो जाएगा ये 6y, नहीं यहाँ पे x तो है ही नहीं, है नहीं यहाँ पे, sorry 8x and then minus 18y plus minus 2y, so 18y minus 2y plus 16y minus 96 is equal to 0। 8 के मल्टीपल से x plus 2y minus 12 is equal to 0, ओके। और इसको इसमें ऐड कर डालता हूँ, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2y minus 3 plus lambda times this thing x plus 2y minus 12, राइट। सो इसका जो सेंटर रहेगा वो क्या होगा, या फिर एक काम करो 2 लैम्डा फोर्स फील्ड डाल दो, या बिकॉज just for convenience, so plus 2 लैम्डा, या सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा just get x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x, और कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, सोचो अपना सेंटर रहेगा लाइक माइनस लैम्डा, और यहाँ पे क्या जाएगा 1, फिर y के लिए क्या आ रहा है 4 लैम्डा वट एवर, और कुछ नहीं आ रहा, राइट। ओके, सो minus 2 lambda, that should be the thing, so if the center and it should pass through the radial axis of course, because that's when you get the smallest circle, right। so इसको इसमें put करके देखते हैं, get some value of lambda in that case, so minus lambda and then plus 2 times this, like 2 minus of 4 lambda is equal to 12, so 5 lambda is equal to minus 10, so lambda must be minus 2, right। let's put that in there, so it's minus 4 यहाँ पे basically, so x square plus y square minus 2y minus 3 वही था नहीं, right, minus 4 times this guy, so minus 4x plus, sorry ये तो already minus 8y plus 12, right, it's 12 plus 48 is equal to 0, so x square plus y square minus 4x, कुछ और तो है नहीं, minus 6y, sorry that's 10y, okay, plus 45 is equal to 0, that's thing। so अपने को ढूंढना क्या है, सेंटर ऑफ दिस, ओ फिर अपने को सिर्फ यही चीज ढूंढनी थी, जस्ट पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2 इन देयर, यू विल गेट द थिंग। सो क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1 minus 2 times of -2 plus 4, so 5, so s is the thing। let's go to d now। A circle passes through the point -1, 1, 0, 6 and 5,5. The point on this circle, the tangent at which is parallel to the straight line joining the origin. What? This point, that point and that। जो 3 point दिए उसके through एक circle pass करता है। Point on this circle, the tangent at which is parallel to the straight line joining the origin
to its center. Seriously don't want to figure out the center actually क्या है. First of all, just view everything with respect to one of the points, and अपन choose करेंगे ये वाला point -1, 1, right? So with respect to -1, क्या coordinates रहेंगे? Like 1, 5 और ये हो जाएगा 6, और 6, 4, राइट. सो ये अपने पॉइंट्स रहेंगे. एंड देन ये स्लोप क्या है? इसका स्लोप रहेगा 5 और इसका स्लोप रहेगा कुछ और ही, मतलब ये तो काम नहीं कर रहा है. स्कॉट टू बी 6/4. हाँ ठीक है. दिस इज ऑफुल. ये ना तो परपेंडिकुलर है ना कुछ, तो भी गॉड. और अपने को क्या चाहिए? इसका सरकम सेंटर जो है. ओके ओके. Point on this circle the tangent at which is parallel to the straight line joining the origin to its center is. और देखो origin को join करना है. कोई ऐसा point होगा जो कि I don't know. Is that the only way कि तुम actually में वो figure out करो कि कौन सा circle है, क्या हो रहा है, right? Is that really the only way to do it? I don't want it to be like that. Point on this circle the tangent which is parallel to the straight line joining the origin to its center is or R. करना ही पड़ेगा ना, और कोई तरीका नहीं है कि ये बहुत रैंडम पॉइंट्स दे दिए. सो दैट्स द ओनली वे. वंस अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ढूंढते थे? इट वाज बेसिकली लाइक, मे बी कोई और तरीका होगा ये करने का. ओह यू कुड जस्ट फिगर आउट द सर्कल इटसेल्फ, यू नो, राइट. सो वो कैसे करते थे? जस्ट यू नो फिगर आउट वन ऑफ दीज लाइंस और फिर oh god, figure out the family of circle that passes through these 2 points, or just check करो कि कब वो family 5, से pass होगी, something like that, right? Okay, so what will be the family of circle though? X minus 1, so like x square तो ऐसे भी होने वाला है, x square minus x, just like that, and then y square minus 7y. Oh sorry, it should be positive. Okay, and then यहाँ पे क्या जाएगा? plus 6 is equal to 0, right? That's the diameter of the circle. So x squared plus y squared plus x minus 7y plus 6 is equal to 0. और जो रेडियल एक्सिस रहेगी, so passing through these 2 points, क्या होगा? y minus, just like y equal to 6 plus x times the slope. The slope is just, you know, 5/1, right? Which is 5. So y equal to 6 plus 5x, I think. Yeah, right. That should do it. So yeah, 5x minus y plus 6 is equal to 0. ये जो चीज़ है इसको इसमें, you know, just put that in there. Lambda times this thing, whatever. Right. Yeah, you got to do that. So this will be x square, right? और आपको क्या चाहिए कि that circle must pass lambda times this thing. So plus lambda times this thing is equal to 0, right? और ये 0 कम, right? That's what you want. और अपन चाहते हैं कि ये 5,5 से पास हो. Of course, just figure out कि इस चीज की वैल्यू क्या रहेगी पहले तो 5,5 पे, which is okay, 25 plus 25 like 50 plus 5 minus 7 times 5 is 35 plus 6, so minus 30 क्या हो जाएगा? 20, 26. Yes, और इसकी वैल्यू 25 minus 5 plus 6, which is 20 plus 6 plus 6 is 26. So lambda must be -1 in that case. Okay, तो अब अपने को सर्कल मिल गया है. It will be x square plus y square minus 4x and minus 6y is equal to 0, right? So it actually passes through 0, 0. Oh, okay, तो दूसरा diametrical point क्या रहेगा? 4, 6. That's the thing.
Oh, sorry. Okay, okay, the tangent at which is parallel to the straight line joining the origin to its center. So normal क्या रहेगा? Perpendicular to that line, right? Of course. And by the way, what is okay? So अपना जो center is 2,3 or just want it to be perpendicular to that. Hey, okay, that's like 2,3. So 2 plus 3 iota, but iota times that thing once again. So 1 plus iota times this. Whatever. Right. That's the thing. That's the thing. Yeah. So this times iota क्या हो जाएगा? So 2 तो यहीं पे रहेगा, but this will be actually -3. So just add कर दो. This will be -1.5, which is not here. Yeah, अजीब है. Oh, you could also have subtracted this thing, right? That will be 5,1, जो कि है यहाँ पे. So R, right? तो इसमें 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट है एक पॉइंट नहीं है. So D का R. Okay. So to 37th. 37th is consider the equation, this equation. So a minus 2a plus 2 है यहाँ पे. एडिशन, अरे यार ये तो अजीब है. यहाँ पे सिर्फ 2 ही होता था, इट वुड हैव बीन डूएबल, बट ठीक है. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ कंडीशन चाहिए अपने को, ठीक है. सो डिस्क्रिमिनेंट तो पहले ढूंढ लेते हैं ना. डिस्क्रिमिनेंट विल बी जस्ट बी इसका स्क्वायर कर डालो. सो 4a स्क्वायर प्लस 24a, सॉरी 12a, क्या कर रहा हूँ, plus 9 minus 4 times of that, minus 4a squared, and then plus 16. So that is going to be 12a plus 25. And so पहले तो मुझे चाहिए कि real and distinct, that just means it's got to be bigger than 0. So for that to happen, a must be bigger than negative 25.12. So a का cube. A का cube, okay. B का क्या है? Both the roots are positive. That just means कि ये जो चीज है that should be it should be negative, and this should be positive. So a square must be bigger than 4. So a has to be, oh, and both of them must be real anyway. So minus 25.12 से बड़ा तो चाहिए देखो. Minus 25.12 is something like minus 2 point something, right? This is basically saying like, okay, it has to be either bigger than 2 or less than -2, whatever. So mod is bigger than 2, whatever. और दूसरा क्या था कि these must be positive. So ये जो चीज़ है that should be negative. So 2a plus 3 has to be less than 0. So a has to be less than -3.2. That means कि हाँ, जो वो दूसरी चीज़ थी that is really not going to work. So -3.2 is less than 3.2 is less than 2. Okay, so -2 जो है that is the maximum value inclusive, right? Because repeated भी रहा तो क्या फर्क पड़ने वाला है. और ये चीज कहते हैं 25.12 because they can't be imaginary, of course, that would make no sense. So there we go. S, इन्होंने इंक्लूसिव नहीं किया, whatever, क्या फर्क पड़ रहा है. डिस्टिंक्ट नहीं बोला ना, जो भी है. नेक्स्ट है, मैंने इरेज क्यों किया? अगर अपने को पॉजिटिव का रेंज मिल गया था देन सिमिलरली फॉर नेगेटिव mod a must be less than 2. So both roots are negative, still negative 25.5 से तो बड़ा है ही. Moreover, अब ये चीज उल्टी हो जाएगी. So like actually a is bigger than -3.2, right? Okay, fine. And then -3.2 is actually more than -2. So a is also bigger than -2. That's actually pretty obvious. क्योंकि अपने को वैसे भी a bigger than -2 लगने वाला था. So -2 रहेगा ना. तो -3.2 से 2, I think that's the way it should be. Right? Because yeah, right, -3.2 is actually bigger than -2. So that's the thing, of course, it should be positive, so it should be bigger than -3.2. और इसमें वो वाली वैल्यूज अपन कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं. सो यस, आर इज करेक्ट, बट सिर्फ पार्शियल आंसर है बिकॉज टोटल जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है वो ये होनी चाहिए. आई डोंट नो यार, ये बहुत ही ठीक है. एक्चुअली -3/2, 2. Oh, and by the way, actually this should be like this.
नहीं एक्चुअली नेगेटिव 3 अपॉन तो अपने को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज एंड व्हाट अबाउट 2 तब वो जीरो हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है राइट सो ओके एंड नेगेटिव 25/12 से भी अपने को बड़ा चाहिए राइट नेगेटिव 25/12 इज नेगेटिव 2 पॉइंट समथिंग तो वैसे भी उससे बड़ा होने वाला है सो नो नो नीड टू वरी या right okay next one root is positive other is negative then this must be इसके बारे में अपन कुछ फिर बोल नहीं सकते बट ये जो चीज है that should be negative so mod a oh shit यहाँ पे भी mod a bigger than 2 था यार मैंने क्या कर दिया ये not nice so it's either less than -2 और इस केस में it's actually bigger than -3/2 oh right a bigger than 2 I think because -3/2 is actually more than -2 तो फिर वो -2 से कम वाले जो सारे नंबर्स थे तो गए वो काम नहीं करेगा सो p will be the answer मैं क्या कर रहा हूँ राइट इसलिए मेरा कुछ नहीं गलत आया था दिस एक्चुअली मस्ट या ओके अब इस केस में अपन इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते बट दिस मस्ट बी नेगेटिव सो a square less than 4 so a belongs to -2 to 2 of course it's actually bigger than -25 वो तो होएगा ही तो अपने आप हो जाएगा नो बिग डील अबाउट दैट सो दैट्स गोना बी r इसका r हो जाएगा ओके लेट्स गो टू 38 नाउ $38 is a real valued function f of x satisfies this f of x plus y upon 3 is equal to what is this 2f of x -4 y अच्छा ये हर जगह पे 2 क्यों दिया है नॉर्मली करो ना f of x plus f of y -2 upon 3 right yeah okay -1 somehow यहाँ पे अगर 3 किसी टाइप से डाल पाए व्हाट इफ लेट्स जस्ट से मैंने -2 दोनों साइड किया तो यहाँ पे क्या जाएगा -8 or something yeah we don't want that 4 would be nice okay अगर मैंने दोनों का मैंने +2 किया let's just define g of x to be you know f of x +2 so this is like दोनों साइड पे +2 कर डालो you will get 6 minus 2 is 4 उसको +2 में स्प्लिट कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा so yes this is like saying g of x plus y upon 3 is equal to you know ये चीज g of x plus g of y upon 3 if you think about अच्छा एक काम करो okay नहीं थोड़ा सा अलग है अलग केस है राइट हाँ upon 3 that's weird ऐसा कौन सा नंबर रहता है what this happens and this is supposed to happen for all real x and y right you know what I'm thinking is इसका just you know derivative ले लेते हैं right yeah I mean partial x so this will be like 1/3 g dash of x plus y upon 3 is equal to ये तो मर जाएगा वैसे भी just 1/3 g dash of x and this is supposed to be happening for all values of x and y right just set x is equal to 0 so or y equal to 3 times of t or whatever so this is like saying that like okay g dash of t is equal to g dash of 0 and this is going to happen for all values of t right okay upon yeah that just means it's a linear function come on right I mean it demands कि ये चीज continuous हो but whatever just assume कि वो continuous है so yes that means कि it's a linear function yeah okay cool f dash of 0 is equal to 2 मतलब कि in fact it's like फिर g of x भी रहेगा ना so उसका भी in fact सेम ही होने वाला है you know what just set g of x whatever पहले अपन g of x का ढूंढ लेते उसके बाद में वरी करेंगे बाकी के चीजों के बारे में thought of like g of x plus g of y okay इतना बुरा भी नहीं है so g of x is you know linear function but plus some kind of constant the thing is कि यहाँ पे अपने को बस प्लस सी मिलेगा यहाँ पे अपने को 2c/3 मिलेगा अगर वो सेम होनी चाहिए तो c must be 0 so एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं it's going to be k times x right and then ये तो obvious equation हो गया okay then it just means like okay and by the way k is 2 because f dash of 0 will get 2
f of x is just going to be like 2x plus some kind of constant. अपन already देख चुके हो क्या constant 2. That's our f of x. So f of 2 is just right, it's like 4 plus 2 which is 6. So a का आंसर होगा, why is that not here? Dash is supposed to be 2, right? You get that thing. It's got to be like that. Oh, come on, seriously. No, it's got to be the thing. 2x plus 2 होगा अपना f of x. So at 2, this will be, 4 plus 2, which is, right, what else? What else could be the thing? Plus 2 की. Of course, like, इसको मैं reduce करूँ, like, f of x plus f of y minus 2 upon 3. फिर 2 से 2 ऐड किया मैंने हर जगह पे. So यहाँ पे 3 times 2, 6 हो जाएगा. So 6 minus 2 would be just 4. उसको मैंने split किया दो हिस्सों में. And it should have worked, right? And then if in the end what you got is the fx like g of x plus 2. Oh, sorry, g of x is f of x plus 2. So f of x is actually g of x minus 2. Right. So it should be minus over there. So 4 minus 2 यानी कि 2 आंसर होगा इसका. So a का आंसर है s. Let's go to b now. The least value of this function is, so 2 minus square root of 4 minus x square की power 4. इसकी least value, seriously. 4. Why 4 exactly? अच्छा इसमें okay, इसमें odd वाले जितने भी रहेंगे odd coefficients वो cancel हो जाएगा, right? Okay, it's just gonna get all the real ones. ठीक है, करते हैं start. फिर पहले तो c0 से start करेंगे. So 4c0 just yeah. और by the way upon 2 है. Nice, right? Oh, and इसमें x bounded है. It has to be between -2 to 2, right? Okay. So let's start it. पहले तो 4c0 and then which is it's gonna be 2 to the power 4, which is of course like just 2 to the power 4 and then 4c1 positive. Sorry, 4c2. Those are even questions. So it's like 4c2 2 power 2 and then sort of इसकी power 2. So 4 minus x squared just like that. And then plus 4c. ये अजीब नहीं है क्या? Okay, this is like bounded and whatever. इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4. This thing must be positive or it's just some kind of polynomial जिसमें सारे जो कोएफिशिएंट्स है वो सारे सारे पॉजिटिव है. तुम जो पॉलिनोमियल में वैल्यू डालने वाले वो भी हमेशा पॉजिटिव रह रही है. एंड इन फैक्ट इट्स लाइक ऑलवेज लेस देन 4. सो बिटवीन 0 and 4 मैक्सिमम कब रहेगा? देन whenever this thing is 0. So actually it's just 2 power 4 plus 2 power 4 upon 2. 2 power 4 16 is the maximum value. तो least value चाहिए. For that just नहीं, लीस्ट वैल्यू तो अपन ढूंढ रहे थे जब ये चीज 0 हो जाएगी. दैट्स द लीस्ट वैल्यू, राइट? या राइट गॉड, या इट्स गॉट टू बी द थिंग. जब भी ये 0 हो जाता है दैट्स द लीस्ट वैल्यू ऑफ कोर्स. सो और मैक्सिमम वैल्यू कब रहती है? व्हेनेवर दिस थिंग इज अ मैक्सिमम व्हिच इज 4 in fact. So at that point, yeah, okay. But that just means like 2 power 4 upon, yeah, 16 should be the thing. 16 यहाँ पे कहीं है नहीं. Four power 4 upon 2. Okay, no, it has to be 16. But यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको 16 जैसा. Right, least value. Okay, it has to be 16, right? इसके अलावा काम नहीं करेगा. यस, इसका डोमेन ही देख लो ना. इसका डोमेन मतलब ये जो पूरी चीज है दैट मस्ट बी पॉजिटिव ऑल ऑफ द टाइम. क्लियरली इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी दैट विल हैपन व्हेन दिस थिंग इज 0 बिकॉज़ ये सारे सारे पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स है. इट हैज टू बी लाइक दैट. सो देयर वी गो. दिस अपॉन, या लाइक दिस इज द थिंग. सो 2 power 4 16 इसमें है नहीं, वो अजीब बात है.
Right. So B 16 is the answer, and it's not in options. Okay, let's go to the next question. So C, let f of x be a differentiable non-zero function satisfying this f dash of, okay, and oh, okay, this is interesting. F of x comma, okay, f of x times y is this thing. Let's define a new function. अच्छा ये क्या है? Non-differentiable non-zero function satisfying. हाँ, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं only for x and y bigger than 0, which will be g of x is equal to e power. Oh, यहाँ पे 4 है by the way. Shit. Or multiply by something that will make this happen. Think यार, think. Okay. 4a, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे a आएगा. Oh sorry, यहाँ पे अपने a किया ना सिर्फ. So इसका स्क्वायर रूट ऑफ a जो भी है. यहाँ पे a, and that is to be like 4a square, and then you got a and a over here. 4a square must also be a. That means either a is 0 or a is 1/4. तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ओके, इस इक्वेशन को दोनों साइड पे 1/16 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे 1/4 मिलेगा, तुम 1/16 को ब्रेक करोगे 1/4 में, राइट? ओके, राइट. सो अब अपन यूज करेंगे फंक्शन e पावर 1/4 f ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x. आई नो अजीब फंक्शन है, बट think about it. What is g of x plus y now? G of x plus y will just be, e power 1/4 f of natural log of x, and then ये चीज प्लस y पे पुट करना पड़ेगा, राइट? Something's weird right there. It should be natural log. यहाँ पे लगाना चाहिए था. मैंने उल्टा कर दिया. मैंने सीक्वेंस उल्टा कर दिया, just उतना ही था. It should be natural log of 1/4 f of e power x. That should be what we will define as g, right? अब फिर अपन g of x plus y देख सकते हैं क्या होगा. That will be natural log of 1/4 f of e power x e power y. But फिर ये property use करके we can write this thing as natural log of 1/4 f of e power x, and then that is 1/4 of f of e power y, right? Which is basically like अब फिर natural log property use करके इसको थोड़ा split कर पाएंगे. It's like g of x plus g of y, right? So from that Cauchy equation हो गया ये basically, मतलब कि g of x is just some kind of linear function, right? So if g of x is some kind of linear function, ये चीज कोई type का linear function है, yes. Oh, and specific type of linear function, इसमें कोई constant नहीं चलते, yeah. Okay, that just means कि इसको e power कर दो, like 1/4 f of e power x is equal to जो भी है. Oh, by the way, it's like 4 and then e power की a power x बोल सकते हैं, and then x या फिर natural log of x डाल दो, like f of x is equal to 4 a power natural log of x or whatever, which is like e power natural log 8 times natural log x, so x power something, right? In the end, it's like 4x power n, right? That's how it's going to behave. So yeah, right. So for example, f of 0 is just 4, which is like obvious from here. Just x equal to 0 or y equal to 0 put karo, you get the thing that f of 0 is either 0, which I mean, okay, it can happen. Oh, it's a non-zero function. Okay, that means it cannot be, because then this could be like ye type of function, right? Then yes, that's the thing. So if an f dash of 1 is 1/4, you are saying iska derivative ले लो. So f dash of x is just x power n minus 1, और तुम 1 पे देख रहे हो तो like 4n, that's equal to 1/4, of course. That means n equal to 1/16, so it's supposed to be 4x power 1/16. Then the derivative of f inverse of x at x equal to 4. So basically it's like, suppose x equal to f of t बोल दिया. It's like saying 1/f dash of t. So x equal to pi upon 4 is like saying f of t is equal to 4, right? When is f of t equal to 4? Whenever x is equal to 1. Sorry, whenever t equal to 1, right? So f dash of 1 we already know is just 1/4. It's like this is going to be 4. That's it, right? Oh yeah, that 1/4.
गेट इट, ये हर जगह पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है उसको ये उल्टा सीधा लिख रहे हैं. इट्स एज इफ तुम इसको यू नो जस्ट एफ डैश ऑफ टी लिख रहे हो. दैट कांट बी करेक्ट, राइट? दैट कांट बी करेक्ट. So f dash of t is like, okay, the derivative of, and t is by the way just the inverse function of x. So you are saying ki this is actually this. What? No, that can't be right. For example, let's just try it out. I don't know, on some function. Let's just say sine inverse or something. This is not. This is like nonsense. You know that, right? Try it on I don't know, f sine x is equal to sine inverse of x का derivative क्या होता है? 1 upon square root of 1 minus x square. That's a usual thing. But what you are saying is कि that's equal to f dash, which is equal to cosine of and then f inverse of x is sine inverse of x, of course. It's like x is supposed to be 1. Huh. It's supposed to be square root of 1 minus x square over here. Cosine is supposed to be square root of 1 minus x square, right? As you can see, ये लोग पागल हो गए. ये क्या है यार? We know this must be 4, not 1 upon 4. क्या प्रॉब्लम है इनकी? ये डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ x जो है ये उल्टा सीधा क्यों लिख रहा है? ये हमेशा रेसिप्रोकल करते हैं इसका. क्यों? I don't get it. Yeah, this is why would they want to do this? तुम देख सकते हो कि उल्टा नहीं रहता है ये. I mean सीधा ही है. As you can see, actually 1 upon f dash of t रहता है. You get the idea, right? हाँ. Yeah, that's the thing. So, whatever. The answer is 4. It's not 1/4. ये लोग पागल हो गए. So 4, not 1/4. Okay. Next is D, right? F of m comma n is equal to, so it's n plus 1 if m is 0. If God, ये क्या है? F of 1 comma 1 is, अच्छा, so n कौन से कैटेगरी में बैठता है इसमें? सॉरी, m जो है वो 1 है. कौन सी कैटेगरी में बैठ रहा है? 0, not equal to 0, not equal to 0. So जब ये 0 नहीं है, it's going to be this thing. So 1 minus 1, yeah, okay. And n is in which category? Okay, it's not equal to 0 as well. So basically इसमें बैठ रहा है. So it's going to be f of, so m minus 1, right? M minus 1 is just going to be 0. And f of m is like, okay, f of 1, and then n minus 1 is supposed to be 0. Okay, ये चीज. पर अपने को फिर पहले ये ढूंढना पड़ेगा, what is f of 1 comma 0? So 1 is in which category? It's not equal to, right, इसकी m value is not equal to 0 and n value is actually 0, so ये इस category में बैठेगा, which is just f of 0 comma 1. Is that right? Okay, और फिर उसको अपने को, right, this is just equal to that thing. और ये चीज क्या है? ये चीज x में just n plus 1 है, right? Because yeah, like m 0 है, so n plus 1, which is 2. So बस यहाँ पे तुम 2 put करो, f of 0 comma 2. That's what we are looking for. Once again, m is just 0, so 2 plus 1 is 3. 3 is the answer. So t का आंसर p हो जाएगा. हाँ, so लग रहा है मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ऐसे लाइक रिकर्सिव फंक्शंस जो भी छोड़ो, ऐसा रियली मैं कंप्यूटर से काम कर रहा हूँ, जो भी है. नेक्स्ट 39. Focus of hyperbola is 1 comma 2 and directrix other than its corresponding directrix is 6x plus 8y plus 3 equal to 0. If transpose x is 2 then E is. Focus दिया है, directrix other than its corresponding directrix is ये चीज. Oh, so okay, that thing. Basically ऐसा बोल रहा था कि तुम वो distance, that distance we just know is supposed to be AE plus A upon E. That distance is equal to इसका distance from this thing, which is 6 plus 16 plus 3, which is, so 9 plus 16 is 25. 25 upon ये चीज का हो जाएगी 10, yes, which is 2.5, whatever, that's the thing. 5 upon 2 लेके डाल देना इसको, right? So A times E plus A upon E is equal to 5 upon 2, and transpose x is 2. That just means 2a is equal to 2, मतलब a equal to 1. So actually like e plus 1 upon e is equal to 5 upon 2. Guess मारो, 2 is the solution. So eccentricity must be 2. I ever बोला यार, it must be 2. It cannot be 1 upon 2. So 39th का
2 is the answer, which means R. A का R. B का करते हैं. Asymptotes of a hyperbola are x equal to 1, y equal to 1 passes through 2 comma 3, that its transverse axis is. Asymptotes दिए. अच्छा, it passes through 2 comma 3. Its transverse axis is. Oh god. Oh wait, okay. Look, it's a rectangular hyperbola because जो asymptotes है वो 90 डिग्री के इस पर है. So from that you can say eccentricity is just square root 2 or whatever. More or less like AB is just a square, right? So x equal to 1, y. So इसका जो center रहेगा that will just be 1 comma 2. With respect to center, ये क्या line से? It's like x equal to 0 and y equal to 0. और ये क्या हो जाएगा? This point is just 1 comma 1, right? So it passes through this thing. It's going to be a rectangular hyperbola, or like xy equal to some kind of constant. In this case, xy equal to 1. Yes, right. So xy is equal to 1 is the hyperbola that we're looking for. Yeah. And जो AB value है, that's like जो tangent length create करता है, whatever. In this case वो अपनी करने की जरूरत नहीं है, पर no parallelogram का area, you know the thing. तुमने वीडियोस देखी होगी मेरे, तुम्हें पता होना चाहिए. मुझे एक्सप्लेन करने में मत लगाओ यार. ये जो एरिया रहता है जस्ट AB अपॉन 2, राइट? इस केस में जस्ट A स्क्वायर अपॉन 2, और इस केस में परपेंडिकुलर, सो लाइक जस्ट स्क्वायर बेसिकली, रेक्टेंगल व्हाटएवर. और 1 कमा 1 है ना पॉइंट अपना, सो xy 1, देयर वी गो. So really just A square is equal to 1, square root 2 is equal to 1, so A square is just 2. So square root 2 is the semi-major axis, semi-transverse axis. So 2 square root 2 is the answer. So B का Q. Okay, C करते हैं. Area of triangle formed by a tangent asymptotes of the hyperbola is. सीधा पूछ ही ले रहे हो. So okay, we know this thing. Tangents and asymptotes for the triangle where AB is the thing. In this particular case is 12. Oh sorry, नहीं अच्छा A क्या square root 3 और फिर 2 है, 2 square root 3. Yes, so 12 का square root 3 get किया. So C का P. ये तो बहुत डायरेक्टली यानी बस जो प्रॉपर्टी बताया गया ऐसा हो गया. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इज x square. Oh god. Think it's like x minus 1 ka square plus 2 times of, so minus actually minus 2 times of minus 2 से बाहर निकालो, what you get, just get minus 4. So more or less just y minus 2 का square, right? Minus 4, and that's why is equal to 9 plus इसके लिए 1 आएगा, फिर इसके लिए आ जाएगा minus 2 times of 4. You had to add that, तो दोनों साइड पे ऐड करना. So that's only minus 8, which is of course is 2. So अपने को सिर्फ ज्योमेट्री देखनी है, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखनी है. So yeah, get rid of this shifting, just x square minus 2y square is equal to 2. That's the thing. X square upon 2 minus y squared upon 1 is equal to 1, right? What's the लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी? b squared upon a, right? So at x is equal to ae, which is in this case like square root of 4 minus 1 square root 3 whatever. So जब ये 3 होता है, that's y coordinate क्या होता है अपना, like 3 upon 2 is equal to that. Y squared is equal to 1 upon 2, 1 upon square root 2 का double, so square root 2. Huh? Wait, what? Something went wrong. Oh yeah, okay, 2b squared upon a, so b is just 1. Yes, it's correct, square root 2 is the length. दोनों टाइप से वही मिल रहा है. सो डी का आंसर एस. फिर 4D करते हैं, चलो लास्ट. Okay, probability of A when C is happening. Of course. क्या कितने इसमें ओह गॉड, इसमें तो यानी 3-4 दिए. इसमें 3 सेट्स अपने को यूज करने पड़ेंगे, राइट? So 3 गोले like that. So A, B, C. The probability of A when C is given to be happening. So I don't know, C इसको बोल दो. तो तब ये चीज मतलब कि ये पूरा जो एरिया रहेगा अपॉन ये पूरा एरिया, राइट? That's what you want. And then plus probability of B given C is happening. That's like this area plus this area upon ये पूरा area C का, right? What is that? मैंने क्या कर दिया? What is that equal to? That minus probability of A intersection B.
So A intersection B is this thing given C, that's this thing, right? So दो बार ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट एक बार किया, यानी कि वापस उतने गए, मतलब ये बेसिकली इतना पूरा एरिया हो गया, राइट? या दैट्स इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो A यूनियन B इज ऑल ऑफ दिस थिंग, सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट? नहीं, okay, sorry, it is correct, that should happen because, right, it's just equal to probability of A union B given C, right? Actually yes, that is correct. So not happening यानी कि ये वाली probability, ये वाला area रहेगा upon area of C whatever. In this case it's just R. Okay, so एक R. Okay, B क्या करते हैं? Probability of A intersection B not happening. थोड़ा सा erase करो यार. सो वंस अगेन मैं इसको नाम इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, राइट? अच्छा, ए करना है अपने को इंटरसेक्शन बी नॉट हैपनिंग, सो बी happening is this thing, b not happening is all of that, so A union that, and once again like given C, that's just going to be like this area, right? Exactly. Okay, plus probability of A intersection B, so this area, right, given C. Okay, that's going to be this area, और ये सब upon area of C है, of course, yeah, I think that should be the thing, right? A तो है, so it's like probability of A given C, which is Q. वो तो obvious है because B हो रहा है नहीं हो रहा है, दोनों probability तुमने इसमें ले ली तो वो तो हो ही जाएगा अपने आप. Just probability of A union, sorry, A given C, so Q. Okay, C करते हैं. 1 minus probability of A, just like probability of A conjugate, whatever. So ये पूरा एरिया बचा हुआ. Okay, minus probability of B union C. B union C is like this whole area. By the way, इसको हटाओ, इसको ये क्यों मैंने यहाँ पे लिखा? Okay, so oh god, 1 minus probability of A is just this whole area. फिर probability of B union C, उसको तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तुमने इस पूरे इसको सब्ट्रैक्ट किया, बट लोग तुमने ये जो चीज है उसमें तुमने नेगेटिव एरिया ऐड कर दिया अनफॉर्चुनेटली. ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ओके, दैट्स लाइक दिस थिंग, तो तुमने वैसे भी ऐड कर दिया, देन ओके तुम जस्ट राइट. सो इट्स लाइक ओ तुम्हारे पास में ये पूरा एरिया था, ए को छोड़ के तुमने बस ये जो एक्स्ट्रा एरिया, मतलब ये पूरा शेडेड एरिया, राइट, वो वाला एरिया जो है विच इज इन फैक्ट जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ वो सारी चीज, राइट, ये माइनस कॉमन निकाल लो. सो वो तुमने सब्ट्रैक्ट किया उस एरिया से, सो बेसिकली तुम्हें ये पूरा एरिया मिल गया. यस, which is basically like 1 minus probability of A union B union C, right? Yes. So that's the probability of कि तुम A B C में से कोई भी नहीं होने दे रहे हो. और ये क्या है? 1 minus probability of B union C. B union C is this thing, so 1 minus that thing is like this complete thing. Okay. Huh, that's weird. Wait, what? एक बार वापस पढ़ते हैं इसको. 1 minus probability of A for with this area. But why probability of B union C? क्यों क्या कर रहे हैं लोग? Sir, with this whole probability. Oh God, what is that? Isn't that area actually more than this whole area? Shit. I mean seriously, shit. ये तो बहुत बुरा हो गया because A intersection B union C, this has to be that area. Of course, ये probability हो ही नहीं सकती क्योंकि 1 से बड़ा है. So हाँ, this is equal to 1 or something. I don't think it's equal to that, right? It can't be. I mean, 1 minus B. Look, अगर यहाँ पे A union B union C होता, then I would have done this blindly. Yes, but ऐसा नहीं है in fact. So ये तो सही नहीं हो रहा है. It has to be this whole area, right? अगर ये A union B union C होता, then it would be very much correct, but नहीं है ये. So it's not one, it's none of these. Okay, it's gonna be T. अच्छा, ये ऑप्शन क्या है? A not happening given B intersection C not happening, which is okay, ये चीज का एरिया नहीं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा अलग हो गया.
right? Okay, this is probably just none of these. ठीक का क्या है? So A not happening union B not happening. So A not happening यानी कि पूरा पूरा एरिया, then B not happening यानी कि ये पूरा पूरा एरिया. So सारे पॉइंट्स जो कि उसमें हो, राइट, ये यूनियन में नहीं आते. सो ये पॉइंट्स तो वैसे भी नहीं आते, राइट. इट्स जस्ट गॉट टू बी ये सारे पॉइंट्स. और इसके अंदर कोई पॉइंट्स आते हैं क्या? सच में हाँ. लुक, डी के सारे जो बाहर के पॉइंट्स है वो सारे के सारे इनफैक्ट में लेने हैं, राइट. और ए के सारे बाहर के पॉइंट्स में लेने हैं. सो बस ये जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके ही पॉइंट्स तुम नहीं ले सकते हो. बाकी तुम्हें सारे पॉइंट्स मिल गए. ओके, एंड देन प्लस बी इंटरसेक्शन बी, तुम्हें पूरी की पूरी मतलब दुनिया की प्रोबेबिलिटी मिल गई. सो ये यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी है just going to be 1. So S is the answer. So this is it, right? 40 of these done. I'll see you guys in the next video. Bye.